Hello kids, how are you all? I hope you are doing well. Today we discuss chapter 5, reproduction in plants. Here is some warm-up questions. Look here, unscramble the following words to make the meaningful words. So what you have to do, you have to unscramble these words and make a meaningful word. As you already read about these things, so you can do it by yourself. Here is, let's know about the structure of a plant, types of reproduction in plants, asexual reproduction in plants, sexual reproduction in plants, seed structure, germination of seeds, seed dispersal. These are the topics, student, we will discuss in this chapter. Okay, here is, we see a variety of plants around us, though these plants vary in shape and size. They show some basic common features. A typical plant may be broadly divided into two main parts. The part below the ground, root system, and the part above the ground, shoot system, comprising of a stem, leaf, flower, and fruit. So these are the parts of a plant. Student, listen to me. These are the things. A plant has two main parts, that is the root system and the shoot system. Look at this picture. Here is a picture. This is the root and this is the shoot system. Okay, students, here is, do you know? An average size tree can provide enough wood to make 170,100 pencils. The tallest tree ever was an Australian eucalyptus. In 1872, it was measured at 435 feet tall. The evaporation from a large oak or beech tree is from 10 to 25 gallons in 24 hours. Here is the California redwood coast. Redwood and Gantt square are the tallest and the largest living organism in the world. The baobab tree found in Africa can store to 120,000 liters of water in the swollen trunk. So, these are the facts, students. You can learn these things and you have to know about these things. Okay, here is the sixth one. The elephant grass found in Africa is named as it is 4.5 meters high and even elephant can hide in it. और बच्चे जो एलिफेंट ग्रास होता है आपको अफ्रीका में जो मिलता है वो 4.5 मीटर्स टॉल होता है. इवन उसकी जो साइड से या उसके पीछे आपका एलिफेंट भी छुप सकता है. That's why हम उसको elephant grass बोलते हैं. Okay, here is types of reproduction in plants. Reproduction is the process by which living organisms such as plants and animals produce young ones of their own kind. So the students, reproduction क्या होता है? वो process जिसमें कोई organism, कोई plant, कोई animal अपने जैसे किसी young ones को क्या करता है? Produce करता है. Okay, here is, flower is the reproductive part of a plant. It may contain the male reproductive part, stamen, or female reproductive part, carpel or pistil, or both. Although most flowering plants reproduce through seeds. Reproduction in plants may be of two types, asexual reproduction and sexual reproduction. Student, listen, what happened that is a reproduction. What is actual reproduction? Student, reproduction होता क्या है? रिप्रोडक्शन होता है जब आप किसी अपने जैसे को प्रोड्यूस करते हैं. ओके, अब हमारे प्लांट्स के जैसे भी बहुत सारे प्लांट्स होते हैं. अब जो आपके प्लांट्स होते हैं उनका रिप्रोडक्शन बच्चे या तो सीड्स की हेल्प से होता है, वैसे हमारा जो प्लांट होता है उसका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है दैट इज फ्लावर. ओके, और फ्लावर में भी मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं. जो फीमेल ऑर्गन होता है दैट इज कार्पेल और पिस्टल. या तो एक प्रेजेंट होता है बच्चे या वो दोनों प्रेजेंट होते हैं. या तो कोई एक कार्पेल और पिस्टल प्रेजेंट होता है या फिर आपका कार्पेल या ओनली पिस्टल प्रेजेंट होता है. ओके, स्टैमेन इज द मेल पार्ट. ओके, हियर इज asexual reproduction in plants. It is a type of reproduction which does not involve the reproductive parts of the plant. So बच्चे asexual reproduction कैसा होता है जिसमें आपके plants के reproductive parts जो है part नहीं लेते हैं. Okay, the first one is vegetative propagation. It is a type of asexual reproduction in which a new plant is produced. Vegetative propagation. It is a type of asexual reproduction in which a new plant is produced
from a vegetative part of the parent plant such as root, stem or leaf. So बच्चे वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है? जब आपका प्लांट जो है वो अपने किसी पार्ट से प्रोड्यूस होता है, लाइक या तो वो पेरेंट प्लांट से आता है या फिर वो रूट से या आपके स्टेम से या फिर लीफ से. नाउ द फर्स्ट वन इज रूट्स. इन प्लांट्स सच एज कैरेट, रेडिश, turnip, sweet potato, the roots may become swollen with food. Buds present at the base of the old stem above the root gives rise to a new plant. So the student, जो आपकी roots है like carrot, radish, turnip, वो क्या होता है बच्चे, उनमें food store होता है और वो कैसी हो जाती है, वो swollen हो जाती है. But जो उनकी buds जो है वो कहाँ प्रेजेंट होती है बच्चा? बेस में प्रेजेंट होती है, ठीक है, और वहां से ही किसी न्यू प्लांट की ग्रो होती है. Okay, so that is the way of vegetative propagation by roots. Look at these pictures: radish, carrot, turnip. Okay, here is stems. Underground stems of certain plants such as onion, bulb, ginger, rhizome, and potato tuber give rise to new plants. A potato has a special structure called eyes. These give rise to buds that may grow into a new plant. Onion bulbs store excess food and may give rise to a new plant. The rhizome of ginger has scale leaves where buds arise which may give rise to new plants. So बच्चे अब हम बात करें स्टेम्स की, और वो स्टेम आपके प्लांट्स की जो अंडरग्राउंड ग्रो करते हैं जैसे ऑनियन, जिंजर, पोटैटो. अब बच्चे जो आपका पोटैटो होता है उसमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर होती है दैट इज आइज, और वो क्या होती है, वहां से आपकी न्यू बर्ड का फॉर्मेशन होता है या आप बोल सकते हैं न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है. सिमिलरली जो आपका ऑनियन होता है उसमें एक बल्ब टाइप स्ट्रक्चर होती है जो स्टोर करती है एक्सेस फूड को, और वहां से एक न्यू प्लांट का क्या होता है बच्चे, न्यू प्लांट आपका प्रोड्यूस होता है. ओके, सिमिलरली जो आपका जिंजर है उसमें बच्चे राइजोम प्रेजेंट होते हैं कहाँ? लीव्स पे, और वहां से आपका न्यू प्लांट अराइज होता है. ओके स्टूडेंट्स, हियर इज, लुक एट द पिक्चर्स: ऑनियन, बल्ब, ginger, rhizome, potato, tuber. Okay students, also plants such as rose, jasmine and sugarcane may rise to new plants through stem cuttings. So बच्चे ये कुछ plants हैं जो नए plants को produce करते हैं, कैसे? जब हम stems की cutting करते हैं. Okay, look here, look at the pictures: rose plant stem cutting, jasmine plant stem cutting, sugarcane plant stem cutting. So these are the process by which we get a new plant. Here is leaves. In plants such as bryophyllum, new plants are produced from leaves which have buds along their margins. These buds may give rise to new plants which they detach from the parent leaf. That means बच्चा कि आपकी जो ब्रायोफिलम जो प्लांट है वो क्या होता है बच्चा, उसकी जो लीव्स होती है वहां से उसके नए प्लांट का क्या होता है बच्चा, प्रोड्यूस होता है. क्यों होता है? क्योंकि जो उसकी लीफ होती है वहां पे बर्ड्स होती हैं और बर्ड्स उस लीफ को दूसरे प्लांट से डीअटैच करके एक नए प्लांट को फॉर्म करते हैं. ओके, लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज ब्रायोफाइलम लीफ. ओके, हियर इज स्पोर एंड कॉर्न फॉर्मेशन. Apart from the above mentioned methods, plant like mushrooms, molds, ferns, mosses reproduce by spore formation. Spores are special reproductive structures. Trees like pines have reproductive structures called cones. So बच्चे spores और cones क्या होते हैं? हमारे कुछ plants हैं जो इन मेथड से अलग मेथड से रिप्रोडक्शन करते हैं, जैसे आपकी मशरूम है, मोल्स हैं, फर्न्स हैं, और उनमें जिस स्ट्रक्चर से आपका रिप्रोडक्शन होता है वो स्पोर्स होते हैं, और जैसे आपका पाइन ट्री जो होता है उसमें बच्चा कौन प्रेजेंट होते हैं. ओके, हियर इज वी हैव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. इट इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन व्हिच इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, reproductive cell. The process of sexual reproduction in plants start with the transfer of pollen grains from the anther to the stigma of the same or different flower. The process of pollination has been discussed in the previous chapter. So as you already know what is pollination. So the student, जब pollination जो होता है वो आपके same flowers के pollen grains भी हो सकते हैं और different flowers के. Okay, look here, look at this picture. This is a mature flower and these are the parts of a flower. Look here student, stigma, style, filament.
Look here, it is ovary, ovule, and here is nectary, stamen, anther, pedicule. These are the parts of a flower. Okay, students? Here is fertilization. Once a pollen grain falls from the anther to the stigma of a similar plant, it might start to germinate due to the presence of a sticky substance present in the stigma. The pollen grain on the stigma then grows into a long pollen tube which carries the male reproductive cell or gamete through the long style in the ovary. So बच्चे fertilization start कब होती है? जब आपके सेम फ्लावर के pollen grains आपके सेम फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा पे क्या होते हैं? ट्रांसफर होते हैं. ठीक है, वहां पे आपका जर्मिनेशन स्टार्ट होता है. क्यों? क्योंकि वहां एक स्टिकी सब्सटेंस प्रेजेंट होता है इन स्टिग्मा. ओके, और जो आपके पोलन ग्रेन्स हैं वो आपकी लॉन्ग पोलन ट्यूब में ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं और जो आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो स्टाइल के थ्रू ओवरी तक आपके पोलन ग्रेन्स को क्या करता है बच्चे? ट्रांसफर करता है. ओके, हियर इज इनसाइड द ओवरी लाइज द ओव्यूल्स और फीमेल गैमेट. और जो आपकी ओवरी है उसके अंदर आपके ओव्यूल्स दैट मींस फीमेल गैमेट प्रेजेंट होते हैं. The male gamete now combines with the female gamete to reproduce a zygote which later gives rise to a baby plant through seed or seedling. तो बच्चा जो आपका मेल गैमेट है वो कंबाइन होता है फीमेल गैमेट के साथ और आपको एक प्रोडक्ट या आप बोल सकते हो एक जो चीज मिलती है दैट इज जायगोट. और वो क्या होता है कि आपके बेबी प्लांट को क्या करता है बच्चा? सो स्टूडेंट वो आपके बेबी प्लांट को प्रोड्यूस कराता है थ्रू सीड्स और सीडलिंग. गेट इट? Look here, look at this picture. Here is pollen grains on the stigma, then pollen tube, then we have egg cells or we can say that female sex cells. Here is ovary, style and stigma. These are the parts of a flower. Okay, here we have fertilization. Fertilization is the process in sexual reproduction by which the male and the female gametes fuse together to produce a zygote. सो द स्टूडेंट फर्टिलाइजेशन क्या है? एक प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? फ्यूज करते हैं और आपके जाइगोट को क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, हियर इज वी हैव फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन. आफ्टर फर्टिलाइजेशन all parts of the flower except the ovary dry and fall off. The ovary changes into the fruit tissues and the ovules change into seeds. तो बच्चे जो आपका फ्लावर है उसके सारे पार्ट्स फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हो जाते हैं? ड्राई हो जाते हैं. लेकिन क्या आपका बचता है? दैट इज योर ओवरी एंड ओव्यूल. ओवरी और ओव्यूल चेंज होते हैं बच्चा. ओवरी आपके फ्रूट में चेंज हो जाती है और ओव्यूल्स और टिश्यूज आपके सीड्स में चेंज हो जाते हैं. ओके, हियर इज seed structure. A seed is a small embryonic plant. The outer covering of the seed is called the seed coat that protects the tiny plant from insects, disease and damage. The small pore outside the seed through which air and water enters in the micropyle. The part that will grow into root is the radicle which grows first and the part that grow into shoot is the plumule. Seeds usually have one or two seed leaves or cotyledons, which stores food for the growing embryo. A seed having one cotyledon is called monocot, and one having two cotyledons is called dicot. So, student, हमारे जो seeds होते हैं उनकी दो टाइप की स्ट्रक्चर होती है, एक मोनोकोट एक डाइकोट. जिसमें सिंगल कॉटिलिडोन प्रेजेंट होता है वो एक मोनोकोट होता है एंड जिसमें दो कॉटिलिडोन प्रेजेंट होते हैं वो आपके डाइकोट होते हैं. एक्टिविटी: soak maize and bean seeds overnight. Carefully remove the seed coat from the seeds. Closely examine the seeds. Observe the micropyle, plumule, radicle and cotyledons in seeds. The students may record their observation in the following tabular format. So you have to observe and write your observation in this table. Now we have a check and mate. You can do it by yourself. Now germination of seeds. The growth of seed into young plant or seedling is called germination. For a seed to germinate or grow into a baby plant, it needs the following condition. Water helps the seed to swell up so that the embryo can start growing. Warmth speeds up and improves the process of germination.
Air, oxygen releases energy for the embryo to germinate. Look at this picture. This is germination of seed. When the conditions are right, the seed starts to take in water, swells, and the seed cord splits apart. Air gets in, burns the packed food inside, and releases energy for the baby plant to grow. A tiny root grows downwards, whereas a shoot begins to grow upward. Tiny leaves sprout at the end of the shoot that start making food. At this stage, it is called the seedling. Finally, the seed shrinks and disappears. More and more leaves grow and the stem becomes thicker and stronger. The plant then produces flowers and seeds and the process continues. So स्टूडेंट क्या होता है, जब भी आप किसी सीड को जर्मिनेट कराना चाहते हैं तो उसको कुछ कंडीशंस, फेवरेबल कंडीशंस होती हैं. लाइक आप वाटर, जब आप अपने प्लांट को कॉन्टिन्यूअस एक वाटरिंग उसको चाहिए होती है, एक प्रॉपर एयर एंड वार्मथ. क्या होता है, जब आप उसको वाटर देते हैं, जो आपका सीड है वो क्या करता है, स्वेलअप करता है, धीरे धीरे उससे एक टाइनी प्लांट निकलना स्टार्ट होता है. और उस एक टाइनी प्लांट की क्या होती है, एक छोटी सी लीफ होती है जो क्या करना स्टार्ट कर देती है, फूड बनाना स्टार्ट कर देती है प्लांट के लिए, और धीरे धीरे आपका प्लांट जो है ग्रो करना स्टार्ट कर देता है. डू यू नो, a Russian team discovered some seeds of Silence stenophylla, a flowering plant native to Siberia that had been buried by an ice age squirrel. Radiocarbon dating confirmed that the seeds were 32,000 years old. They placed them in vials and germinated the plants which grew, flowered, and after a year created seeds of their own. So student, आपके कुछ रशियन जो है उन्होंने, एक टीम ने डिस्कवर किया एक सीड जो 32,000 ईयर्स पुराना था. उसके बाद उन्होंने उसे एक फेवरेबल कंडीशन दी, वो प्लांट ग्रो हुआ, उसपे फ्लावर्स आए और एक साल के बाद उसने अपने जैसे कुछ सीड्स को क्या कर दिया बच्चे, प्रोड्यूस कर दिया. हियर इज सीड डिस्पर्सल. The movement or transport of seeds away from the parent plant is called seed dispersal. Need for seed dispersal. Dispersal of seed is very important for the proper growth and development of both the parent plant and the new saplings. If the seeds falls just onto the ground below the parent plant, they might not get enough sun, water or nutrients from the soil. This would result in competition among them for these resources. Ultimately, they would die. Dispersal also helps plants to grow in new geographical areas. Therefore, plants have developed various ways to disperse their seeds. Let us study a few ways of seed dispersal. So, student, seed dispersal क्या होता है, जब किसी सीड को अपने पेरेंट प्लांट से उसकी मूवमेंट हो जाती है या वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है. हमें सीड डिस्पर्सल की नीड क्यों होती है? सपोज आपका कोई प्लांट है और उसका सीड उसी से नीचे अगर वो ग्राउंड पे जाता है तो क्या होगा, वहां पे उसे कम सनलाइट मिलेगी और वो उनमें आपस में क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स के लिए, सॉइल से जो उन्हें मिलता है, सन के लिए कंपटीशन होगा. इस चीज से अवॉइड करने के लिए और वहां पे ग्रोथ भी नहीं होगी, हमें सीड डिस्पर्सल की नीड होती है. डिस्पर्सल बाय विंड. Seeds from plants like dandelions and cottonwool trees are light and have feathery bristles and can be carried long distances by the wind. Some plants like kori and maple trees have winged seeds. They do not float away but flutter to the ground. Wind dispersed seeds have to be produced in large numbers so that at least some may grow. सो स्टूडेंट्स, क्या होते हैं, विंड डिस्पर्सल किन प्लांट्स की सीड्स का होता है, जिनकी सीड्स जो है वो लाइट वेटेड होते हैं. ठीक है, जैसे कॉटन वूल आपका होता है, डैंडेलियंस का जो प्लांट है उसके जो सीड्स हैं वो बहुत लाइट वेट होते हैं. ऐसे सीड्स किसके थ्रू डिस्पर्सल होते हैं बच्चा, विंड के थ्रू. डिस्पर्सल बाय वाटर. Seeds of plants that grow near on water bodies are dispersed by water. For example, lotus and coconut seeds are dispersed by water. In case of coconuts, their waterproof and fibrous wooden casing allow them to transport it to extremely long distances in salt water. So student, dispersal by water that means वो seeds जो कौन से plants के seeds जो आपकी water bodies के आसपास होते हैं, जैसे lotus आपका है, coconut आपका है, तो इनके सीड किसके थ्रू डिस्पर्स्ड होते हैं, वाटर के थ्रू होते हैं. और जो आपका कोकोनट होता है उसका जो सीड होता है वो बहुत फाइब्रस वुडन की केसिंग उस पे होती है. वो क्या करता है, वो लंबे टाइम तक वाटर में रह सकता है. दैट्स वाई वो सॉल्ट वाटर में बहुत दूर तक ट्रांसपोर्ट हो जाता है. डू यू नो, द लार्जेस्ट सीड इन द प्लांट किंगडम कम्स फ्रॉम कोको डी मार पाम, native to Seychelles archipelago in the Indian Ocean about 1,000 miles east of Kenya.
The cocodemar seed weighs up to 18 kg but can float and is dispersed by water. So students, जो आपका largest seed है वो कौन से plant का होता है? Cocodemar palm. So this is a plant whose seed is largest. Dispersal by animals. Animals and human beings throw away seeds after eating the fruits at different places, thus helping in seed dispersal. Animals and birds get attracted by the bright color and nutrient-rich flesh of fruits. They then disperse the seed by defecation or by spitting them out. Some seeds develop hooks and spines that get tangled in animals' hair or fur and are carried to the new locations. So बच्चे, जो आपके एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स है उनके थ्रू डिस्पर्सल होता है कि हमने कोई फ्रूट खाया, उसका जो सीड है वो इधर उधर हम फेंक देते हैं. आपके जो एनिमल्स है वो भी क्या करते हैं? सीड्स को इधर उधर फेंकते हैं. तो ये किसके थ्रू डिस्पर्सल होता है? एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के. Dispersal by explosion. In some plants such as pea pod and lady's finger, seeds are dispersed through explosion mechanism. The seed spores slowly dry out in the sun, creating pressure inside the pod. The pod bursts open when the pressure inside is great enough, thus projecting the seeds away from the plant. So बच्चे, जो आपका explosion, that means जैसे आपके pea होती है या lady finger होती है, वो क्या होता है? उनमें जो seeds होते हैं वो जो आपका लेडी फिंगर या पी है वो एक टाइम के बाद एक्सप्लोड हो जाते हैं सनलाइट के प्रेशर से और उनके सीड्स जो है वो डिस्पर्स हो जाते हैं. नाउ वी हैव चेक एंड मेट. यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ. व्हाट वी लर्न इन दिस चैप्टर, नाउ वी विल डिस्कस इट इन अ नटशेल. A typical plant may be broadly divided into root and shoot systems. Reproduction in plants may be either asexual or sexual. In asexual reproduction, also known as vegetative propagation, a new plant arises from parts such as root, stem, or leaves. In sexual reproduction, the male and female reproductive cell gametes fuse to form a zygote, which later gives rise to baby plant through seed. A seed comprises of structures such as seed coat, micropyle, plumule, radicle, and cotyledons. A seed requires water, warmth, and air, oxygen to germinate and give rise to a seedling. Dispersal of seeds is very important for the proper growth and development of the parent plants and the saplings. The various agents of seed dispersal are air, water, animals, and explosion. Here is some keywords. Look here. Vegetative propagation. Reproduction from plant parts such as root, stem, leaves, spores, and cones. Zygote. It is a fertilized egg that gives rise to a baby plant. Defecation. The act of passing the contents of bowels out of the body. The act of passing the contents of bowels out of the body. Seedling. A baby plant. Thank you, student. We will meet again in the next step.